Ladies and gentlemen, good day and welcome to the Servotech Power Systems Limited Q3 and 9M FY24 earnings conference call, hosted by Ventura Securities Limited. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need any assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star and then 0 on your touchtone telephone. Please note this conference is being recorded. The company is today represented by Mr. Raman Bhatia, Founder and Managing Director, and Mr. Vipin Kaushik, Finance Controller. I would now like to hand over the call to the Managing Director of the company, Mr. Raman Bhatia, for his opening remarks. Thank you, and over to you, sir. Thanks, dear. Good evening, everyone, and thank you for joining us today for this conference call. We welcome you all on our Q3 and 9-month FY24 earnings call. While Servotech has achieved a remarkable revenues and profit growth over the past 3 years, I understand that the decline in quarterly growth compared to the previous year's quarter might raise concerns. It's important to remember that sustainable growth often requires strategic consolidation phases to prepare for a bigger leap. In Q3, we made a critical investment in infrastructure expansion and I'm very sorry, I got some call, so just allow me 1 minute. While Servotech has achieved remarkable revenue and profit growth over the past 3 years, I understand that the decline in quarterly growth compared to the previous year quarter might raise concerns. It's important to remember that sustainable growth often requires strategic consolidation phases to prepare for a bigger leap forward. In Q3, we made critical investments in infrastructure expansion and key partnerships, laying the groundwork for further scalability and market leadership. These investments may have temporarily impacted short-term growth, but they position us for a significant gain in the coming years. While new government guidelines for the EV industry did lead to some project delays, we saw this an opportune moment to make these strategic investments to stay ahead of the competition. I assure you that our commitment to delivering long-term value for our shareholders remaining unwavering. We are confident that the current consolidation period will pave the way for even greater success in the future. I would like to begin with a brief overview about Servotech Power Systems Limited with a rich history of over 2 decades. We have evolved as a sustainable and renewable solution manufacturing company. We take pride in our role as a leader in innovation, driving in transformation in the sustainable energy sector with cutting-edge solar products and EV chargers. Our diverse product line reflects our commitment to eco-friendly, user-friendly, and cost-effective technology, shaping power generation and electric mobility. For instance, our AC chargers 3 kW to 23 kW and DC chargers ranging from 30 kW to 360 kW are seamlessly compatible with all major EV brands. Additionally, our solar division offers a range of products including inverters, batteries, and panels. We are in position to command a significant market share in India's EV charging domain, counting major oil marketing companies, CPOs, EV manufacturers, fleet operators, and other government entities among our permanent clientele. In a bid to bolster our market presence, we have started to build our new factory to cope up market demand, and its phase 1 will get operational before April 2024. The initiative aims to produce 24,000 DC EV chargers annually, propelling us closer to our objective of emerging as one of the leading manufacturers in EV charging industry. We are privileged to participate in BPCL E-Drive project, and I am pleased to announce that recent achievement in securing substantial orders from BPCL for the supply of 1,800 DC chargers and around 2,700 AC chargers. These orders are not only showcase our firm commitment to delivering state-of-the-art, cost-effective technology, but also reaffirm
our steadfast dedication to promoting sustainable energy solutions. These further cement our reputation as a reliable ally in the journey towards a more environmentally friendly future. We have a signed technical cooperation agreement with one foreign company to manufacture world-class internal components like power module, PLC, main control cards in India, and will start manufacturing in defined TMP timelines as per Ministry of Heavy Industry, which is June 2024 and December 2024. The industry. The Indian EV industry is poised for exponential growth in the coming years, supported by strong government commitment, increased private investment, and evolving consumer preferences. With a focus on cost reduction, infrastructure development, and technological advancement, India has a potential to become a global EV manufacturer and consumption hub. Currently, Indian electric vehicle is expected to grow at a CAGR of 66.52% during the 2022 to 2029 forecast period. The Indian solar industry is anticipated to grow at a CAGR of roughly 40% between 2023. Our solar vertical is working on innovative products to contribute in solar mission. Just because the market is also propelled by supported government policies like Pradhan Mantri Surya Yojana in January 24 for rooftop solar installation in 1 crore households. This will enable 1 crore households to obtain 300 units of free electricity every month. For that, we wish to share with you, we are happy that now Servotech is eligible to sell products in UP under subsidy scheme, and we are enrolled with the UP government under the scheme, and we are unable to provide a subsidy to the end user. Until 31st March, our goal that Servotech should get enrolled in more than 7 states like that to provide a subsidy to end user under the scheme, which will give boost in Servotech's revenue. In summary, Servotech's outlook is exceedingly promising as we embrace the vision of pioneering technologies, our relentless pursuit of innovation, strategic partnerships, and our steadfast dedication to sustainability. We are primed to seize the multitude of growth opportunities ahead, confident in our capability and capacity to expand operations and deliver value to our stakeholders. Hand over to Vipin so that he will share with you financial performance. Good afternoon, everyone. We are pleased to share our financial performance. Our revenue increased by 37.8% to 21,750 lakhs in 9 months 24 from 15,850 lakhs recorded in 9 months FY23. The driving force behind this growth was sustained success in the securing orders in the EV charging division. Further, the sustainable increase in the adoption and the demand for the electric vehicles, along with the growing emphasis on the advanced EV infrastructure, significantly contributed to the overall expansion of our revenue. In Q3 FY24, we witnessed delay in the release of the tenders by the various agencies, which impacted our top line. EBITDA demonstrated a remarkable growth of 64.6 to 1,631 lakhs in 9 months FY24 from 990 lakhs in 9 months FY23. This expansion in the margin measured by 121 basis points was driven by the greater proportion of the products with superior margins in our portfolio and increase in the scale of operations. PAT for the 9 months FY24 stood at 834 lakhs, up from 501 lakhs in 9 months FY23, with a margin increase to 3.82 from 3.16 in the corresponding period. I thank you for the time, and we are happy to answer any questions you have. And thank you, and we hand over to Raman sir for any opportunity. Hello. Yeah. We thank all the participants for attending this session. We believe that we have satisfactorily run you through our company and business model and addressed every arising question thereon put on the floor by the participants. We continue to see growth in our broad product portfolio and witness a strong momentum across our business supported by R&D and other strategic initiatives. We remain focused on bringing new products, exploring new markets, and creating value for all our stakeholders. And hope you have a great day ahead. Thank you once again. Thank you.
Thank you, sir. Ladies and gentlemen, we will now begin the question and answer session. If you have a question, please press star and 1 on your telephone keypad and wait for your turn to ask the questions. If you would like to withdraw your request, you may do so by pressing star and 1 again. Dear participants, if you have any questions, please press star and 1 on your telephone keypad. So the first question comes from Aditya Shah, an individual investor. Please go ahead. Hello, can you hear me? Yes. Hi, congratulations for your 9 monthly stellar results to you and your team. I'm really happy as a shareholder for that. But my first question would be, sir, that if you compare the quarter-on-quarter performance, there was a steep decline, not just on terms of capex, but also in terms of revenue. Can you share two things? First, on what kind of capex that you're actually undertaking, how will it contribute to the revenue in the near term and long term? And secondly, why the revenues were so reduced in comparison to the previous quarters? Please allow me to speak in Hindi if you are okay. Then I. Please, sir. Please go ahead. Yes. बिल्कुल सर. Yes. मैंने अपनी लास्ट स्पीच में भी आपसे बताया है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ. गवर्नमेंट की बहुत सारे प्रोजेक्ट और बहुत सारी पॉलिसी दोबारा से फ्रेम की गई हैं, जिसके हिसाब से आपको मैन्युफैक्चरिंग में अपने प्रोडक्ट में बहुत कुछ चेंज करना था. एंड वी वर वेरी अनसर्टन कि हमें फाइनल क्या स्टेप लेना है. इट वॉज नॉट क्लियर सिंस लास्ट 6 months, राइट. तो ये एक ऐसा टाइम था कि जब आप खाली होते हैं तो आपको ये सोचना होता है कि आप इंतजार करें या कुछ काम करें. तो हमें लगा कि कम से कम हम अपनी फैसिलिटीज को बड़ा करते हैं. जब मार्केट बहुत बड़ी होनी है तो क्यों ना बड़े लीडर की तरह काम किया जाए. तो ड्यूरिंग दैट वी हैव स्टार्टेड वन न्यू फैक्ट्री प्लांट विच कैपेसिटी विल गेट डबल, राइट. तो अभी तक हमारा जो टोटल कैपेक्स है दैट आई थिंक विल क्रॉस अराउंड 30 crore in total. Okay. And on the final balance sheet, you will find this capex. Because 9 months में balance sheet नहीं होती है, that's why you are not able to see. But on the financial year 23-24, you will find this amount. Okay. And sir, कब तक ये capex होगा complete? मतलब the factory कब तक क्लोज होगा वो? टोटल कैपेक्स जिस तरीके से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, ये तो अगले 3-4 साल चलने वाला है. हमने टोटल जो कैपेक्स का प्लान किया है वो 300 crore का दिया है. अगर आप हमारी पुरानी भी स्पीचेज और सारी चीजें देखेंगे तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एंड ब्रीफ एवरीवन दैट वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट मोर देन 300 crore इन नेक्स्ट 3 years. ओके. और ये फैक्ट्री कब तक होगी, कब तक बनेगी वैसा? ये फैक्ट्री का जो पहला फेज है इट विल गेट स्टार्टेड इन अप्रैल 2024. April 2024. Okay, sir. And sir, one more thing कि revenues जो कम हुए थे उसका कोई रीजन रहेगा हमारे पास? तो रीजन तो बताया आपको कि सारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो सारे डिले हुए गवर्नमेंट के. और हमारे बिजनेस में हमारा 60% से ज्यादा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे हम डिपेंड है. ओके. और वो इम्पैक्ट आपको हमारा नहीं, ईवी डोमेन में जितनी भी कंपनियां सबसे देखने को मिलेगा. इट इज नॉट ओनली अस. यू कैन चेक ऑल द सेक्टर. करेक्ट. यस सर. ओके, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग. और एक क्वेश्चन है कि आपको ये बजट में व्हाट डू थिंक अबाउट द ईवी पॉलिसीज बाय निर्मला मैम? उनके बारे में कोई आपका ओपिनियन है कि क्या हो सकता है एंड हाउ विल इट कंट्रीब्यूट टू योर ग्रोथ? सर अभी ये जो बजट आया है ये इंटरमीडिएटरी बजट है. एक्चुअल बजट आएगा आफ्टर द इलेक्शन. तो बेटर है उस पर हम बात करें, क्योंकि अभी वाले बजट कितना रहेगा नहीं रहेगा क्या होगा वी कांट से. तो बेटर वी हैव टू वेट. ओके सर, नो प्रॉब्लम. थैंक्स. आई थिंक दैट्स गुड फॉर मी. थैंक यू. Thank you, sir. The next question comes from Agastya Dev from CEO from Capital. Agastya Dev. Please go ahead. अच्छा.
हेलो सर, अगस्त दवे नाम है सर। थैंक यू सर आपके एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए, आपसे बात करने के लिए। दूसरा, आपके ओपनिंग रिमार्क्स में काफी कुछ आंसर्स मिल गए। सर, ये जो डिलेज हैं उनका अभी क्या स्टेटस है? क्या वापस ट्रैक पर आ गया है? बिकॉज ऐसा ही सिमिलर डिले सोलर पंप में भी देखने को मिला था, और वो सब एक एक दो क्वार्टर से डिले हुआ एंड फिर अभी सब ट्रैक पर आ गया है कुसुम स्कीम में। सर ये भी ट्रैक पे आ गया है, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये भी ट्रैक पे आ गया। अगर आप ऑनलाइन जाके न्यूज देखें तो अभी हमें बीपीसीएल का पहला ऑर्डर मिला है 1800 यूनिट का। जी करेक्ट यहाँ सर, मुझे करेक्ट। कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हिंदुस्तान में जितने भी टेंडर रोल आउट हुए हैं उनकी टोटल क्वांटिटी है 8060 यूनिट की। जी। एंड आई एम हैप्पी टू शेयर विद यू, सर्वोटेक का मार्केट शेयर उन ऑर्डर का इज मोर देन 58%। 58 सर, 58? यस, 58। ओके ओके। तो यू कैन अज्यूम कि कितना बड़ा मार्केट शेयर हम लेने जा रहे हैं बहुत जल्दी। तो सर मैंने आपकी प्रेस रिलीज देखी थी, तो 38 जनवरी को आपको ये ऑर्डर आपने एटलीस्ट पोस्ट किया था एनएससी पर। ये बीपीसीएल वाला जो नया ऑर्डर आया 120 करोड़ का। तो अगर मैं आज की बात करूं तो आज की डेट में ऑर्डर्स का ऑब्वियसली फ्लो आ ही गया है, और आपका मैन्युफैक्चरिंग भी अभी लाइन पर आ गया है, या अभी एक आध महीना और डिले रहेगा सर? मैन्युफैक्चरिंग में हम पीछे नहीं है। अच्छा। हम ऑर्डर अवेटेड थे, और अच्छा। क्योंकि ऑर्डर अवेटेड थे इसलिए हमने नई फैक्ट्री स्टार्ट कर दी, क्योंकि आगे बहुत बड़े ऑर्डर और आने वाले हैं। तो उसकी मैं समझा सर, अभी मैं समझ गया पूरी तरह तैयार है। मैं समझा सर। सर, क्या फिर आपने अपना जो यूपी प्रोजेक्ट था, आई नो लैंड एक्विजिशन चल रहा है अभी या स्टार्ट होने वाला है, तो क्या आप वो लग रहा था सॉरी सर, चल रहा था उसमें गवर्नमेंट के जो काम है वो थोड़े से आपको मालूम है बहुत टाइम देते हैं, वो टाइम जो ले रहे हैं उसके लिए मैं रुक नहीं सकता। तो ना रुकेंगे, इसके लिए हमने जहां हमारी फैक्ट्री है वहां हमने एक नई फैक्ट्री एक्वायर की थी लास्ट ईयर में। जी 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 ऑलरेडी स्टार्ट एवरीथिंग। तो इट इज एन इंटरमीडिएटली प्लान, जिसको आप कह सकते हैं मिड टर्म प्लान, वो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, सो दैट हमारी कैपेसिटी डबल हो जाए। समझ गया सर, समझ गया सर। सर तो आपने बेसिकली अपनी तरफ से सब तैयारी कर दी जब थोड़ा सा एक्टिविटी में लल था। अब आप रेडी हैं, और जैसे जैसे ऑर्डर आते जाएंगे आप एग्जीक्यूट करते जाएंगे। आपकी तरफ से कुछ डिले नहीं होगी। जो डिले होगी वो ऑर्डर आने की तरफ से हो सकती है, आपकी तरफ से नहीं होगी। आप तैयार हैं? हम बिल्कुल तैयार हैं। आप बिल्कुल तैयार हैं। खुशी होगी अगर हम कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं बहुत जल्दी, तो हम चाहेंगे कि कुछ शेयर होल्डर हमारी फैक्ट्री को देखना चाहें तो मोस्ट वेलकम। हम कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं बहुत जल्दी। इवन हम उनकी वीडियो और कुछ रिलीज करेंगे ऑनलाइन, सो दैट आप लोगों को पता लग सके कि हम पहले से कहाँ आ गए। जी 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 जरूर सर। आपके जो पुराने कमेंट्स रहे हैं उसमें आपने मेंटेन किया है कि लॉन्ग टर्म में आप 60-40 का रेशो लेके चलेंगे, 60% फ्रॉम ईवी एंड 40% फ्रॉम सोलर। एंड सोलर में भी आपने बहुत स्पेसिफिकली रूफटॉप सोलर की बात की है, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर डिस्कशन ईवी के में आपने अपने प्लान्स और कैपेबिलिटीज बहुत डिटेल में बताए हैं, लेकिन जो सोलर साइड है उसमें आपकी कैपेबिलिटी क्या क्या है सर? आप क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका। मैं आपको उस पर एक ही बात बताना चाहता हूँ सोलर पर बात करने से पहले। राइट, ईवी के अंदर हम लोगों ने ऐसा कहा था कि हम मार्केट का बहुत बड़ा शेयर ले पाए, राइट, और हम उस दिशा में आगे बढ़ गए हैं। जो मैं आपको अभी कह चुका हूँ कि अप्रोक्सीमेटली 58% है, जो 1% ऊपर नीचे हो सकता है कैलकुलेशन। राइट, मैं आज कंफर्म जो किया है तो मोटा मोटी उससे आ सकता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा शेयर होता है कि पूरे हिंदुस्तान के मैन्युफैक्चर एक तरफ और सर्वोटेक कह रहा है 58%, जो 55 से लेकर 60 की कुछ भी हो सकता है। सेम ऐसे ही अगर हम बात करें तो जो सोलर की हम बात कर रहे हैं, सोलर की मार्केट में भी हम कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं जो आज आम इंसान के लिए अफोर्ड करना आसान नहीं है। राइट, अच्छा। यानी कि अगर आज आप जाते हैं, एग्जाम्पल लेता हूं कि आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो मार्केट शेयर है वो कार का, वो है मारुति का। उसकी रीजन ये है कि आम आदमी की पॉकेट है, जो बजट अलाउ करती है उस रेंज की गाड़ियां आती हैं उसकी। जी, राइट। मर्सिडीज चाह के भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती जी, क्योंकि मर्सिडीज का वो रेंज भी नहीं है, कस्टमर उसका कस्टमर कैटेगरी नहीं है वो, तो वो कभी भी इतना बड़ा मार्केट शेयर नहीं ले सकती। ये अग्री विद मी, राइट। अगर हम इसी बात को देखते हैं तो, लेकिन जो आदमी की मारुति खरीदता है वो एक बार ये जरूर सोचता है कि काश मैं ये वाली गाड़ी ले सकता, लेकिन मेरा बजट नहीं है, ठीक है, मेरे को ये सारे फीचर मिल रहे हैं, ऐसे मन को समझा के आगे बढ़ जाता है जी। अग्री। तो सेम ऐसे ही
सोलर इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसको लेने की इच्छा सब रखते हैं, लेकिन वो ले इसलिए नहीं पाते क्योंकि उनकी लेने उनके बजट नहीं है, उनके बजट नहीं है, राइट। हम वो प्रोडक्ट आज की प्राइसिंग पे सब देने जा रहे हैं, जिसमें से सबसे बड़ी बात अगर मैं करूं तो जो पानी वाली बैटरी है उसको हम लिथियम बैटरी में चेंज करने जा रहे हैं ऑन सेम प्राइस। ओके। ऐसे ही हम सोलर के भी एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट जो आम कस्टमर के लिए अवेलेबल नहीं है, उसको आम कस्टमर के लिए जो अवेलेबल है उसी प्राइस पे रिप्लेस करने जा रहे हैं। अच्छा। तो हम मार्केट में एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन लेके आने वाले हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं। इसमें टाइमलाइंस क्या है सर? सोलर में आपका रैंप अप कैसे हुआ? क्योंकि आप हमेशा यही मेंटेन करते हैं कि आपके ध्यान में हमेशा 60-40 का रेशो है, लेकिन ईवी में प्रोग्रेस तो बहुत ज्यादा है। तो इस रेशो की बात ऐसा है ना, जब आप रेवेन्यू बढ़ाते हैं, राइट, तो दोनों तरफ से जो रेवेन्यू की ग्रोथ है, अगर वो दोनों की ग्रोथ को मेंटेन भी कर दूं, बराबर भी कर दूं, तो भी अब ये समझ लीजिए कि अगर 100 है और 50 है और दोनों को मैं अगर 50% बढ़ाऊं तो एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों के अंदर बहुत बड़ा फर्क आएगा। एग्जाम्पल देता हूं, जब मेरा बेटा पैदा हुआ तब मैं 25 साल का था, तो मेरे बेटे में और मेरी एज में 25 टाइम्स का डिफरेंस था। जी जी, मैं समझ गया। मेरा बेटा है तो आज वो फर्क आधे का रह गया। तो ऐसे ही वो जो मल्टीप्लीकेशन है ना, उस मल्टीप्लीकेशन की वजह से ये डिफरेंसेस कम हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है। जी 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 जी। तो दैट इज द वे। क्योंकि ईवी इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है और क्योंकि उस इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा वैक्यूम है जी, तो वहां पर शेयर लेना बहुत आसान है जी, इन कंपेरेटिव टू सोलर। और दोनों का जो वॉल्यूम्स है, उन वॉल्यूम के ऊपर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर अगर दोनों पे बराबर का भी लगा दूं तो भी ईवी इंडस्ट्री का साइज बढ़ता चला जाएगा जी। और इन टोटल में परसेंटेज मेंटेन नहीं रह पाएगी, वो बदल जाएगी। जी जी जी। थैंक यू सर। मेरे क्वेश्चन सही थे। एक सजेशन है सर कि क्योंकि थोड़ा सा नेसेंट स्टेज में है इंडस्ट्री, अभी अभी स्टार्ट ही हुई है और गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स बहुत आते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से थोड़े बहुत डिलेज आते रहते हैं। अगर आप थोड़ा सा ये इंडिकेशन दे दिया कीजिए कि कुछ डिले हुआ है, तो ऐसा फीलिंग नहीं आएगी कि अरे कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, क्योंकि क्लियरली कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, जस्ट एक टेम्परेरी डिले है which happened in other government schemes also last year. So it is nothing extraordinary. That is just a suggestion, sir. Other than that, sir, I have nothing more to say. And thank you for answering my question, sir. Very useful discussion. Thank you. मैं एक बात आपकी बात का जवाब इसलिए देना चाहूँ, आपकी एडवाइस वेल टेकन, बट मैं आपको उसका जवाब देना चाहता हूँ जो दूसरे शेयर होल्डर भी सुन रहे होंगे। वो ये है सर कि दो चीजें होती हैं, या तो हम अच्छे वक्ता बन सकते हैं या अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, राइट सर? एग्रीड। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम दूसरे वर्टिकल साफ क्रिएट कर रहे हैं ताकि हमारा डिपेंडेंसी ऑन द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कम हो जाए। जी 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 जी, बिल्कुल। नंबर 2 ये होता है कि जो ये डिले होते हैं वो आपको ये बता के नहीं आते कि मैं 6 महीने की डिले आ रहा हूँ या 5 महीने की, वो हर रोज ये हो रहा होता है कि बस नेक्स्ट वीक हो गया और नेक्स्ट वीक हो गया और नेक्स्ट वीक हो गया। जी जी। तो बहुत बार आप ऐसी सिचुएशन में नहीं आ पाते कि आप किसी को कुछ कम्युनिकेट कर पाए, क्योंकि मैं आपकी डिफिकल्टी समझता हूँ सर, ये आपके हाथ में कुछ था नहीं है। अगर आपके कंट्रोल में होता तो ये हो सकता था, लेकिन मैं समझता हूँ सर, मैं आपका पॉइंट समझा सर। आई अंडरस्टैंड सर, आई अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच सर। 9 मंथ में अगर आप देखें तो हम बेटर हैं पिछले साल के मुकाबले, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जब आप बेटर होते हैं तो सेम लाइक अ गैम्बलर यू कैन टेक अ बेट। तो हमने वही बेट ली कि ठीक है इस टाइम को हम किसी और तरीके से यूज करते हैं। वेरी सेंसिबल थिंग टू डू सर, वेरी सेंसिबल थिंग टू डू, वेरी सेंसिबल थिंग टू डू सर। आई अप्रिशिएट इट सर। सो थैंक यू वेरी मच सर। ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. The next question comes from Mr. Jitesh Parmar, an individual investor. Please go ahead. थैंक यू रमन सर मेरे सवाल लेने के लिए और आपको ये Q9 रिजल्ट के लिए। सर मेरे 2-3 सवाल है। मैं आपका पहला सवाल आपका नाम? आप भी मेरा नाम सुन पा रहे हैं? जितेश परमार। अच्छा, जितेश परमार। हाँ सर, हमने पहले भी बात की है पिछले कॉल पे। हाँ सर मैं 2-3 सवाल पूछना चाहूंगा। पहला तो नंबर पे सर, आई अंडरस्टैंड कि इम्पैक्ट रहा है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का, तो ये अगले क्वार्टर में भी ये इम्पैक्ट आएगा या फिर आएगा? तो सर जो हम लोग गाइडेंस दे रहे थे स्टार्टिंग में,
अराउंड 450 करोड़ इन रेवेन्यू, तो ये अब आप कैसे रिवाइज होते देखते रहे हैं और अगले साल के लिए आपका क्या मतलब ऐसे गाइडेंस रहेगा इन दैट केस? जितने ऑर्डर सर, जो ऑर्डर हमारे पास आ गए हैं और कंफर्म हो गए हैं, उनकी डिलीवरी स्टार्ट होते होते मार्च आ जाएगा। तो वो जो डेफर आ रहा है वो अगले क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में जाके आपको देखना शुरू होगा। ओके सर। तो ऑर्डर तो हो गए हमारे पास, बट उनकी डिलीवरी और एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं हो पाएंगे, बिकॉज 30 जनवरी के आसपास शायद हमने रिलीज की है अपनी पहली न्यूज, राइट। तो गवर्नमेंट में जब आपको ऑर्डर आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, तो दे टुक मिनिमम 1 मंथ। तो फरवरी उसमें जाएगा, मार्च में कॉल ऑफ आने शुरू होंगे और हमारे एग्जीक्यूशन के लिए 20-25 दिन लगते हैं। तो मैं जितना मर्जी कर दूं, उसका एग्जीक्यूशन पार्ट से 1 और 2% ही ऐड होगा इस क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर में। तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट क्वार्टर में ट्रांसफर होगा। ओके सर। और सर कॉन्ग्रेचुलेशन, आज एक्सचेंज पे जो नोटिफिकेशन आया अदानी टोटल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो उसके लिए बहुत सारी बधाइयाँ सर। मुझे ये जानना था सर, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें से हमें कितना मतलब 75,000 टोटल ईवी चार्जर्स का ये ऑर्डर है, तो अगले साल के लिए और अगले आने वाले 2 सालों के लिए हम क्या सोच सकते हैं? जितेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है सर। सर 75,000 पीसेस का ऑर्डर नहीं लिखा कहीं भी, उसमें ये लिखा है कि अडानी का प्लान 75,000 यूनिट का है, उसमें से हम कितना ले पाएंगे इस पे काम कर रहे हैं। ओके सर, कोई भी खबर कैसे भी लिखी हो, अगर हम बात कर रहे हैं तो हम आपको बड़ा क्लियर कट आपको बताएंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जितना मैं इन्वेस्टर के साथ क्लियर हूं, उतना ही इन्वेस्टर मुझ पर यकीन करेगा और मेरे साथ चलेगा। एक और बात कह देना चाहता हूं जो शायद यहाँ पर मेरे दिमाग में आ गई है, आई जस्ट वांट टू कम्युनिकेट टू यू so that it should get spread to all my shareholders. Currently, we have crossed more than 1 lakh shareholders in our company. ये एक बहुत बड़ी बात है कि 1 लाख से ज्यादा शेयर होल्डर हो गए आज सर्वोटेक के। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और शायद ये इसलिए हो पाया कि हम जैसे भी थे, जो भी थे, वो हमने क्लैरिटी हमेशा अपने शेयर होल्डर को दी है कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये हमेशा सच बोला है। और शायद जो भी हमें पता लगता है, जो भी हम काम करते हैं, वो इमीडिएटली हम स्टॉक मार्केट को बता देते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं या हमने ये किया। नहीं सर, वो तो है एंड थैंक्स फॉर दैट। इट हैज ऑलवेज बीन वेरी ट्रांसपेरेंट, तो थैंक यू वेरी मच। तो सर मैं वही सवाल पे वापस आ रहा था, तो हमारी पोटेंशियल क्या है? हम लोग वही मार्केट का जो एस्टिमेट है, फिलहाल हमारा मार्केट शेयर है, क्या हम अज्यूम कर सकते हैं कि 58%, 50% ओके वी कुड विन? और हमारी विनेबिलिटी और सबसे डोंट नीड टू अज्यूम, इट इज 110% कंफर्म। ओके, it is not a mention, it has been done already. Okay sir, now we are waiting for the orders copy. Okay. और सर हमारे जो ऑर्डर्स फिलहाल है वो काफी गवर्नमेंट के पास है, तो हम उसका इम्पैक्ट हमारे कैश फ्लो पे भी देखेंगे? कैसे देखेंगे? मतलब क्या हमारे डेटर डेज बढ़ सकते हैं इससे सिग्निफिकेंटली? कैसे इम्पैक्ट आएगा सर हमारे कैश फ्लो पे और वर्किंग कैपिटल पे? नहीं चाहिए, उसकी बजाय कि इसमें मेजरली जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज हैं वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है मेजरली, उनकी पेमेंट टर्म्स अच्छी रहती है। एक आध को छोड़ के, नाम नहीं ले सकता अच्छा, बट एक आध को छोड़ के, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। बट वैसे आपको बता दूं कि अभी लीगल टीम और कलेक्शन टीम इज वेरी गुड इन सर्वोटेक, तो दे आर डूइंग वेल। ओके। और सर लास्ट क्वेश्चन, अब हम चाहते हैं कि 60-40 हमारा रहे बिटवीन सोलर एंड ईवी, बट अभी हमारा रेशियो क्या होगा? अगर हम Q9 देखें या फिर ये साल के लिए देखें, तो हमारा रेशियो क्या हो सकता है सोलर ईवी के बीच में? लगभग 70-50 है। 70 सोलर और 70 ईवी? नो, 70 ईवी। ओके सर, आई विल गेट बैक इनटू द क्यू। ओके, मेरे सवाल होंगे तो मैं वापस आऊंगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। Thank you, sir. Dear participants, if you have any questions, please press star and 1 on your telephone keypad. The next question comes from Sahil Gupta, an individual investor. Please go ahead. Hello. Thank you, sir, for taking up the question.
सर ये जो अदानी का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाला है उसमें हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया उसमें कुछ कंफर्म्ड ऑर्डर्स नंबर ऑफ चार्जेस भी हैं या फिर हम अज्यूम कर रहे हैं कि 50%? नहीं सर, कंफर्म्ड ऑर्डर आ चुके हैं, डिलीवरी